we started with KPM method, right? And few sums were pending. Which sums were given as homework to you? You all have done that? Have you all done that? Yes, ma'am. Any Yes, ma'am. doubts? Any doubts? No. No, ma'am. Now tell me which sums are pending. For KPM method, how many sums are pending? Illustration number 7 से start होगा मैम. 7, 8, 9, Okay. 10. Okay, 7. see the question number 7. Expected returns and beta of three securities are as follows. There are three securities A, B, and C. Expected returns are given 18, 11, and 15, and beta factor is given. RF is 9% and market return is 14%. Okay, market returns means RM. Which of the above securities are over, under, and correctly valued in the market? What should be your strategy? Now there is a new point. That is why I told you I will teach you this sum. See, first of all, you have to calculate CAPM method. According to CAPM, what is the formula? RF plus beta, RM minus RF. So for A limited, for every limit, for every company, A limited, whether B limited or be it C limited, RF and market returns will be same. Only what will change is beta. So RF is 9%, RM is 14%, and beta is A 1.7. So see, RF 9 plus 1.7 bracket 14.9. 14 is RM. Now when you solve, your answer will be 17.5 A limited. So on B limited and C limited you have to do. Now what is the what is the new point that is being asked in the question? See, which of the above securities are over, under, or correctly valued in the market? Now you have to answer them. Which of the securities are over, under, and correctly valued? Means overvaluation, undervaluation, and correctly valued. How will you come to know? See, very simple. When you compare your expected returns as per CAPM method returns, you will come to know which security is undervalued and which security is correctly valued. See, A security. Look at A security, A limited. What is the expected returns for them? 18. 18. And what is as per the CAPM method? 17.50. Means undervalued. So because you are expecting 18 percentage, but according to CAPM method, you are getting only 17.50 percentage. Means 50.50 percentage is less than what you have expected. So it is undervalued, yes or no? Yes, ma'am. So Yes, when it ma'am. is, yes. So when it is undervalued, you should buy the, what should be the strategy? That is also been asked in the question. See, what should be your strategy? मतलब आप क्या करोगे? अंडर वैल्यूड है तो क्या करेंगे? मार्केट में अगर किसी शेयर की वैल्यू अंडर मतलब कम है तो क्या करोगे? बाय करोगे, सेल करोगे कि होल्ड करोगे? तीन बाय करेंगे होते मैम. हैं, हाँ, बाय तीन ऑप्शंस करेंगे। होते हैं स्ट्रैटेजीज के. तो जब भी शेयर मार्केट में शेयर प्राइस कम होता है तो हम खरीदते हैं, और बढ़ जाता है तो बेचते हैं, और अगर उतना ही होता है, करेक्टली वैल्यूड है, सेम है, तो हम अपने हाथ में उसको रखते हैं. सो दैट व्हेन जब 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 शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब हम बेच देंगे. When the share price will increase, we will sell it off in the market. But meanwhile, we will have to hold on. ठीक है. नेक्स्ट इज बी का. देखो बी का 11% है एक्सपेक्टेड, बट बीटा फैक्टर बता रहा है आपको. बीटा फैक्टर से कैलकुलेट करके हमने कैपेम मेथड से बताया 12%. एक्सपेक्टेड है 11, आपको मिल रहा है 12. तो आप क्या, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? वैल्यूएशन क्या है? ओवर। और अंडर, करेक्टली वैल्यूड, ओवर. ओवर। तो जब ये ओवर वैल्यूड होता है तो मार्केट में आप क्या करते हो? उसको स्ट्रैटेजी क्या होती है आपकी? बेचना. सेल करते. ज्यादा, सेल हाँ, बिकॉज आपको प्रॉफिट हो रहा है करके। ना, इसके लिए. वेरी सिंपल. देखो मैंने आपको बोला ना है सिंपल, बट मुझे एक बार आपको बताना पड़ेगा. नेक्स्ट है सी लिमिटेड. आपने एक्सपेक्ट किया था 15%, और आपको कैपेम मेथड से भी बीटा फैक्टर कैलकुलेट करके भी आपको कैपेम मेथड बता रहा है 15% रिटर्न. मतलब होना भी 15 चाहिए, एक्सपेक्टेड भी 15 है, तो करेक्टली वैल्यूड है ना ये. तो ना ओवर है ना अंडर है, तो क्या है ये?
इसको क्या बोलते हैं? करेक्टली वैल्यू। करेक्टली वैल्यूड। और अगर करेक्टली वैल्यूड है मतलब होल्ड, मतलब ना आपको खरीदना है ना बेचना है, अगर आपके हाथ में है वो शेयर तो रखो उसको, अभी बेचो मत। आया समझ में? क्लियर हुआ? यस Yes, मैम। ma'am. Come on, solve this question. I'm giving you 5 minutes. Yes, everybody done? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Yes, ma'am. Now look at the next question. Eighth one. Following data relates to two securities A and B. Expected returns and beta factor is given. RF is 10%, RM is 18% market returns. He tells you to find out whether which security is better and correctly priced, A or B, which is correctly priced. Correctly means the expected and CAPM method, the expected and calculated value should be same. The expected and calculated value should be same, and that particular security will be having correct value. Okay. So first of all, we need to calculate CAPM. According to CAPM method, the expected returns. Formula is RF plus beta, RM minus RF. For A, RF is, of course, RF and RM will be same. 10% and 18% is RM, 10% is RF, and beta for A is 1.5. Similarly, beta for B is 0.7, 0.70, and RM is 18%, RF is 10%. Apply the formula, solve the equation, and you will get the answers. Now A, it is 22 according to CAPM method. Now look at this table. Look at this table. You have to draw the same table, okay? Security, expected return for A is 22. According to CAPM method, it is 22 only. So when it is expected 22 and when according to CAPM method, it is 22 only. So what is your valuation? What it is valued? Correctly, under, over? How it is Correctly being वैल्यू। valued? Correctly valued. Correctly valued. When it is correctly Correctly valued, what will be your strategy? To buy, to hold, to sell? There are three Hold. strategies. To hold it. To hold it, to hold it. Hold. Very good. Hold it. Okay. Next, B. B has an expected returns of 17% and according to CAPM is 15.60%. So it is undervalued or overvalued? It should be undervalued. Undervalue. Yes. And because it is undervalued, what we need to do? Buy, hold or sell? We have to buy it. We need to buy. Very Buy, good. buy. Why? Why we need to buy? Because it is undervalued. Undervalued. Only when the prices are less in the market, we will buy. And when the prices will increase in the market, we are going to sell the security so that we can fetch a good amount of profit. Is that clear? Come on, do Yes, it. ma'am. I'm waiting here only. Do it. I'm giving you 2 minutes to solve. 2-3 minutes. And solve it properly. Huh? They have written the formula and then again 22% डायरेक्टली लिखा है उन्होंने. तो आपको एक एक प्रॉपर सीक्वेंस में सॉल्व करना है जैसे यहाँ पर किया है लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ, स्टेप वाइज उसको सॉल्व करो. ठीक है. टेक 5 minutes, नॉट अ प्रॉब्लम, बट डू इट प्रॉपरली. यस, डन. यस मैम। डू इट. ओके, हो गया ना. चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक आप होमवर्क में ले सकते हो अभी. कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी एक्स with the help of following information. Market returns मतलब RM, RF दिया हुआ 9%, बीटा अभी 3 बीटास दिए हुए. ये देखो पहला बीटा 1.8, मतलब आपको कैलकुलेट करना है 1.8 के हिसाब से रिटर्न्स कितना होगा. फिर 1.1 मतलब सेम सिक्योरिटी एक्स का क्या बोलते हैं, बीटा फैक्टर चेंज हो रहा है 1.1, तो उसके हिसाब से रिटर्न्स कितना होगा. एंड देन बीटा इज 0.75. तो इसी सिक्योरिटी एक्स का बीटा 0.75 होगा. व्हेन बीटा इज 0.75, तो आपका आंसर क्या होगा. सिर्फ कैपेम मेथड ही निकालना है और कुछ नहीं करना है. बट एक ही एक्स सिक्योरिटी है और एक ही एक्स सिक्योरिटी के 3 बीटाज हैं. तो तीनों बीटा, अगर बीटा अलग है तो आंसर भी तो अलग आएगा ना, रिटर्न्स अलग आएंगे ना आपके.
समझ में आ रहा है आपको? Yes? Yes, ma'am. You want to do it? Do it now. No problem. Do Okay, it. ma'am. It will take hardly 5 minutes, but do it. And tell me the answers. You have to change. You have to keep changing beta. RM and RF will be same, huh? And write down A when beta is 1.8, B when beta is 1.1, C when beta is 0.7, and go on solving it. Okay. Formula has to be Okay, written ma'am. only. Yeah. Formula has to be written only once. RF plus beta, RM minus RF. Do it. I'm waiting here only for 5 minutes. Yes, done. Yes, ma'am. What Yes, are the ma'am. answers? Come on, tell me. When beta is 1.8, what is expected return? 28.80%. 28.80%. 80. Very good. 28.80. When beta is 1.10, It's 21.10%. 21.10%. very good. 21.10. And when beta is 0.75, 17.25%. 17.25%. 17.25. Very good. Now see, 11th sum is the last question of KEPM. Expected returns and beta of three securities are as follows. XYZ के तीन expected returns and beta दिए हुए हैं. If risk free is 7% and market return is 12%, which of the above securities are over, under, and correctly valued in the market, and what strategy should you use? Can you do it in homework, Yes, ma'am. Yes, ma'am. or you can do it right away now, as you say? अभी कर लो क्योंकि हम फिर हाँ अभी कर लेते हाँ हैं. कर लेते Right now, 5 ma'am. Right minutes. now, ma'am. Yeah, do it right now because otherwise you will have to do it in homework, and anyways it is going to take 5 minutes, so do it. Do it and let me know the answers. Yes, have you done? Ma'am, just 1 minute. Okay, no problem. Come on quickly, meeting is going to end in Done, 2 ma'am. minutes. Yeah, so tell me the answers. Tell me the answers now. X First x का आंसर बताएंगे मुझे? 14.50%. Okay, y 14%. and z. 10.50%. ओके, अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स x का 14 है और कैलकुलेटेड 14.50 है. मतलब ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है कि करेक्टली वैल्यूड है? ओवरवैल्यूड है. Overwhelm. तो बाय करेंगे कि सेल? अंडरवैल्यूड. सेल Sell करेंगे. करेंगे. वैशाली अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? बेटा आपने गलत आंसर दिया. नहीं मैम, ओवरवैल्यू सॉरी. आप है ना केपम मेथड के आंसर को देखकर बताओ. ठीक है, अभी देखो y का एक्सपेक्टेड मतलब मैंने सोचा था 14% मिलेगा, पर केपम मेथड बोला है 14 ही मिलेगा. सो करेक्टली वैल्यूड हुआ ये? यस और नो? यस मैम, Yes, दोनों ma'am. सेम है. यस मैम, ये दोनों दोनों सेम मतलब गोल्ड. सेम है. करेक्टली वैल्यूड मतलब गोल्ड. होल्ड करेंगे. एंड मुझे बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है अगर 12% और z के, और आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है 10.50, सो इट इज अंडर करेक्टली और ओवर वैल्यूड? It's अंडरवैल्यूड. अंडर. undervalued. वैशाली आपको किसके आंसर को देखना है? केपेम के आंसर को. केपेम का आंसर एक्सपेक्टेड से कम है मतलब अंडर वैल्यूड. सो अंडर वैल्यूड है मतलब बाय करना है. ठीक है? बाय. यस, एंड अवर चैप्टर इज ओवर. Okay, so listen everybody, now what we are going to do, we will start with efficient market hypothesis, and I will take maximum 25 minutes to complete that chapter. So we are going to complete in one lecture only, but I will have to give a break of 10 minutes. So we will join at 1:05 or so. Is that okay? 1:05 Yes, ma'am. p.m. Okay? यस मैम. Okay.
We will join in 10 minutes, okay? I mean, take a break of 10 minutes.